So welcome everyone, another session of Onacademy. Is it audible to all? Okay, right. I think we all are live. Okay. So welcome to Onacademy, India's largest learning platform, dear all. So this is the Onacademy. These are the plus features for all of you. You can enroll the plus features, right? And these are the free classes and these are the plus classes, right? These are the free classes and these are the plus classes. Everything is available in plus, right? And special class features, these are the special class features. You will attend the session so that it will give you more knowledge about the different type of examination, right? And this is the batch course already started for all of you. And this is the complete course for ARI Amin batch, right? Starting from Kete 20th September. Already started, you can join the session. And this is the comprehensive advanced course, right? You can join the session. Okay. And these are the Parikshan batch, price hike alert. बहुत जल्दी कौन सी प्राइस बढ़िया को जाऊँगी, you can join the Onacademy session, right? And this is the prices. 1 month रो जदि करिबो 1400, 3 month रो जदि करूचो 3500, 6 month जदि करूचो 5600 और 12 month होची 7000 टंका, 24 month को होची पिले माने 8400. Now you can enroll with this is the discounting price, old price. These are the new price. Price बढ़िया को जाऊँगी. You can कौन कहली join the courses, right? 21st September रू कौन करूँगी तुम्हारा price हाई के वाक जाऊँगी. तेणु तुम्हें कौन करिबो? You have to enroll the plus subscription, right? Plus as well as the special class features. Okay. So today you will have special session on constitutional background of India. India रो constitutional background विषय मु किछ कहिबी. आउ यार गोटे सेकेंड पार्ट जोड़ा तुमरो एटा स्पेसिफिकली तुमरो OPSC रो जो मेंस एग्जाम आगु कहबो जाउची ताको बेस करी करा होची constitutional background. आउ यार जो सेकेंड पार्ट अछि सेटा मु स्पेशल क्लास रे रिकवर करिवि. तेणु जो माने जदि अटेंड करि परिबोनी ताले स्पेशल क्लास रे यू कैन अटेंड द सेशन, राइट? Now coming to the topic, right? Constitutional background of India, right? You might have known the constitution, right? Constitution means what? Constitution means fundamental law of the land, right? Now if you see the constitutional machinery, it is a rule. Remember, it is a rule, but it is seems to be a law, right? Because there is a lacuna of every articles. That is why we have 495 articles. Initial, like in the initial stage, right? In the initial stage, whatever be the number of articles, 395. Through the process of amendment, the number of articles has been increased. Now, if you see the constitutional background before the framing of the constitution, how the governments and the machinery will working.
how the governing council will handle the total administration of both provincial as well as the princely states. So before before the, if we'll see the past माने पूरा जदि अतीत को पळेबो, before the 16th century there is something, there is a constitutional background. Remember, the constitution, the law has been enforceable in India during the period of the Mughals. At the initial stage during the Maurya dynasty there is a constitution, right? Because that constitution coming from the Manusmriti, like the rule book of India, the law book of the India, which is called what? Manusmriti. So if you see the constitutional background already available in India in the past, but it was not spreaded outside the India, right? The other people when enter into India, like Alexander, like Muhammad Ghori, they have found out that constitutional background books like Manusmriti, right? So before British, before the independence, the constitution is regulated by a law, right? जेतले ब्रिटिशर्स माने आसिले तांकर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन थिला? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थिला, he wanted to make the profession of the business, to set up the corporates, right? किंतु corporate जेतेबेले से माने set up करिवे, they will have to make a law which is in the current stage it is called what? Constitutional law, or you can say Companies Law, Companies Act. There is a Companies Act 1956, right? So when they come to India, their first instinct is what? How to control the law, how to implement the law, so that all the peoples who are living in India, they are bounded with a rule. Now some points will be imposed, some points will be integrated, some point will be introduced, like the Supreme Court of India in Regulating Act 1773. In which area it is established? It is established in the Bengal area, right? Why it is implemented in Bengal area? Because most disturbances has been created by the different peasant movements, different farmers business, farmers organization in the state of what? Bengal. So when they come into India, their primary purpose was to make how to control the law, how to control, how to impose the British law in India, so that there will be a changes in the scenario of the Mughal administration, there will be a changes in the scenario of the Maratha administration, there will be a changes in the administration of whom? Mauryas or Guptas, right? So you can say our constitution already available in the ancient age. Subsequently, there is a changes in the structure of the constitution by adding some amendments, both by the foreigners as well as the Indians, right? So if you will see the Constitution of India, we fundamentally says that it is the fundamental law of the land, but now it has been acted as a rule. Somehow it is verified, somehow it is obeyed, but somehow it is not obeyed. That is why the amendment process has been introduced under different articles like 368, right? तेणु जितेबाला से फर्स्ट आसिले ब्रिटिशर्स माने दे हैव कंट्रोल द लॉ. सेकेंड जिनस देख कॉन्स्टिट्यूशनल आमे जितेबाला कहिबा कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ होची इट इज ए कलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जोटा तुमे कहउछ गोटे गोटे विधान जो कहउछ तुमे विधान सभार गोटे गोटे कोन कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जोटा कहउछ गोटे गोटे सीट जो माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जिवे इन द हाउसेस. तेणु सेतेबेले जो कॉन्स्टिट्यूशन हेइथिला different type of constitutional by introducing different type of law, it is purely vested on the executive, not on the legislative, not on the judiciary. The judiciary is also controlled by the executive. Remember, when Supreme Court was established in where? Supreme Court was established in Bengal. The imposition of the law of UK has been imposed, not the laws of the India. India ro law nathila that सेटा पिले माने सेटा थिला कहार यूके रे लॉ. तेणु नाउ दे विल हैव टू इम्पोज द लॉ थ्रू which organization they will impose the law.
So that is why I have already told, when they will start the business, they will have to make a law for the business. That is why they have formed the East India Company. You might have making the confusion of East India Company, right? Britishers come into in the 16th century, right? Before that, Portuguese was established. Before that, French was established, right? Portuguese was established in the western sector of India, and French was established in the eastern sector of India, but not the complete eastern sector. So what the strategy of the British was to make such organization in the name of business, which will focus to the East India. That is why he named the company as what? East India. So their primary focus is what? To establish the British Empire in the Eastern India. बुझेगा कि जदि ओडिशा कथा कहब, ओडिशा इज द फर्स्ट मन रख ब्रिटिशर्स माने जेते आस्थिले सुरत रे जेते फैक्ट्री हितला सेते बालेश्वर भी फैक्ट्री करथिले. तेणु इनिशियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया and implementation of the law will be imposed by whom? East India Company, right? So East India does not mean the easternmost part. East India consisting of the northeastern states, the Myanmar, the Indonesia, whichever the countries there is influence of the China. मन रख चाइना रो जो जो कंट्री उपरे इन्फ्लुएंस थिला सेही कंट्री उपरे ईस्ट इंडिया कंपनी रा फॉर्मेशन करा जायथिला, राइट? तेणु ईस्ट इंडिया कंपनी रो ऑब्जेक्टिव थिला मन रख टू एस्टैब्लिश द पावर ऑफ द बिजनेस थ्रू द imposition of the law, and it was successful till the independence of India. जेतबले ईस्ट इंडिया कंपनी रो बैठक बसिला, बुझेला, there is somehow 15 to 20 people. They will handle the East India Company. They have informed to the Queen Elizabeth that we have captured the easternmost of India with the initiation of Battle of Buxar and Battle of Plassey. Now in the eastern sector, they have established their power. So what will be the strategy of the Queen Elizabeth? Queen Elizabeth कौन कहिबे तांको? Now they have successfully established the business with the help of the law. So there will be order from the British Queen Elizabeth that you have to impose the Queen's law, Queen's proclamation in India. That's why they have imposed that law. UK रो law टाकू आनिकी कोठी impose कले, Bengal रे impose कले. From that viewpoint, we have the law. आमर जिते तमे देखुच IPC देखुच, Indian Penal Code देखुच, CRPC देखुच, Code of Criminal Procedures Code. All the codes has been coming from UK. बुझेला तेणु ए जो IPC आउ CRPC that was what? सेगुडाको सबु there is a copy paste of what? Your Manusmriti, the rule book of India, the law book of India, right? Now the establishment of British Empire has been introduced. Now you can see this is the symbol of Kona East India Company, right? Symbol, because there are three directions. One is northern direction, another is your eastern direction, and another is your what? Western direction. They have very difficult to maintain, to gain the power of the western direction of India, because there was a administration of both French and Portuguese. So they have start from where? The eastern direction. Now the company rule, you might have known there is a differences between the government of British and the company rule, right? Company rule मन रख, company rule it is based on the law of the business. मन रख. Government rule means that was the order which was coming from the UK. UK रू जहाँ order आस्थिला, that is the government's rule or government's order. Company rule माने whatever imposed in the act, whatever the points introduced in the act, that was implemented in India, not in the British. So you might have seen with the initialization of East India Company, there is a fraction between the Queen Elizabeth and the East India Company. That is why there is a repeated visit of Queen Elizabeth to India also, that what was going on with the East India Company, whether they are making the business,
with the establishment of the law, or whether they are making the expansion of the power with the concept of monopoly. And it was already seen there is a concept of monopoly, right? And that monopoly is not on the basis of the business. That law has been converted also in a process of monopoly. Law ta भी monopoly he गला, business ta भी कौन गला पिले माने monopoly he गला, right? Tenu there are two powers which was captured by the British. One is the law, another is what? The administration. So now it is easy to govern because there are three pillars of the constitution. One is your legislative, the representation of the people. Second one is your executive, and third one is your judiciary. Judiciary has been implemented from UK. Executive has the superior power. That is why they formed the Executive Council, right? And there is legislative power. That legislative depends on the two provinces. One is from the princely state, another is what? Your provincial state. Most of the executive action has been imposed on where? The provincial states, not the princely state, because they semane dekhuthile whether there is a united we power, divided we fall. Bujhila? United we win, divided we fall. That concept is working in India or not? जो माने princely अच्छंती state रे से माने whether they are united or they are divided. If there is a divided, there will be a conspiracy of East India Company. There are different amendments, there are different constitutional provisions made by the East India Company in order to make the fractions between the provinces and also the princely state. So East India Company majorly handle, there are two subjects. One is your what? The law. Another is what? Your what? The administration. That is the executive. Judiciary has been copy pasted from where? UK to where? India. Okay. So this is the first act, mona rakha, Regulating Act of 1773. Remember, regulating means what? Regulating means what? It is a rule, mona rakha. We have to regulate the act, not it is a compulsion. It's not a compulsion because जेतବେଳେ initialization आमे power टा को कौन करिवा establishment करिवा सेतବେଳେ आमे सेतବେଳେ hard and fast करिवानी. We'll have to some make relax to those provinces. There is a rising of the power. जो provinces रे power अच्छी ताको आमे कौन करिवा टिके relax दबा. Let see and wait and see approach. What is happening? Now, in the Regulating Act 1773, why it is implemented? First thing I have already told, there is a concept of what? The regulation of the law. You will have to impose that law from UK to India, not to all the provinces, only those provinces. There is a concern of the security. जोडी security concern हेथिला सेडी तमरो 1773 रो act को impose कले. Now they have mixed the East India Company. So East India Company kale. Now they will have to maintain that company with the process of the finance. Now in the 1774, the first Bank of India was formed, which is called the Bank of Hindustan. And most of the Hindustan bank shareholders, they are from the English. They are the shareholders. Now they are making the company. So both they will acquire the profits of the bank as well as the profits of the company. So there are two types of revenue comes to the East India Company. One from the financial sources, another from the business sources. Right? So if two type of revenue will come to the East India Company, there may be a huge number of corruption. When Robert Clive introduced the British East India Company, there is no power of the Queen Elizabeth. Queen Elizabeth karo setole kichi power nathila because they give their assurance not to make a surety of the win kariyaku sene surety nathile. Kintu tame janicho battle of Boxer re jetebele Robert Clive karo kutaniti jetebele kamo kala conspiracy setele Robert Clive karo naata sobole hela. So at the initial stage Robert Clive do not obey the Queen Elizabeth. So they have returned
that will not obey your order because you have not supported at the final stage. Because battle of Buxar and battle of Prashi, this is the deadliest war in the history of India, right? One war was in Chittaranjan, Juda Dasaranjan war at the ancient time. Second one is your Kalinga war, right? Third one is there is a during the Harsa era. Fourth one there is a what? There is a Delhi Sultanate era, right? And this is the war, Battle of Buxar and Battle of the Plasse. These two wars as the deadliest war in the history of India. Tenu jetebele ei dita war re there is a working of the conspiracy of the British is going on. The 1770 Act implemented in order to expand the territory, right? In the territory to which provinces? Both princely as well as the provinces. जेतले Portuguese माने देखिले Battle of Buxar English माने जीति गले. Now they are implementing a rule, or it is an act which is called 1773. Now they are capturing the power in the eastern sector. Then what will do? They have given support to the western princess. Remember, western princess kora power taku badhaya ku lagile. The war of the Tipu Sultan, the war of the Nizam's conspiracy. ए सबु जिनस जो हेइथिला, this is the support of whom? Portuguese. Indirectly they are making the conspiracy between British and France, right? तेणु जिनस लेखा है lack of the proper judicial administration. Remember, judicial administration means there was no court, right? In the Islamic area there is a munsif court. In the Hindu area there is a Panchayati Raj system. All the judiciary decisions is in the name of whom? Panchayati Raj re deha decide korthila. That is the full and final. Karan amara panchayat taku pura direct judiciary bhabare grahana kara jaye as compared to the Supreme Court. मन रख, direct democracy रो best example होची कोटा पिले माने Panchayati Raj, right? So there will be no judiciary administration. Now the implementation of the Supreme Court of Bengal, right? Supreme Court of the Bengal. Supreme Court of the Bengal means what? The law is regulated with the name of the UK. Now will be expanded throughout the Bengal. From the Bengal, it will be expanded to the other states also, right? Okay. देखो Hyder Ali, I have already told, Hyder Ali सहित जेतेले युद्ध होइथिला सेतेले कंपनी कहला डिफीट करिगला पर कोन हला पुनी रिटर्न करिगला को पटको. They have returned to the eastern sector. Now they have changed their approach to make a regulation. 1773 Act is to establish how to expand the territory with the process of what? Law, right? I have already told Supreme Court means what? Supreme means what? It is the full and final verdict. Only he can review his own jurisdiction. The jurisdiction power is unlimited of a Supreme Court, right? Our court is called Apex Court, right? We have already named this one as the Supreme Court of India. But the initial stage, it is called the Supreme Court of Bengal because all the laws has been implemented in the territory of the Bengal. Now it has been expanded through the concept of federal court. When it is named as federal court, the provinces has been expanded to Bombay and Madras. The provinces had expansion kala, setale Supreme Court ku samaste kahle pile kono federal court. Right? There are different scenarios happening for the amendment of the judiciary, like the I-Word bill, right? Okay, mu kahibi se bishare tenu मन रख Supreme Court of Bengal नथिला पिले माने एटा Supreme Court of British थिला, because the British law has been imposed in where? The Bengal. Right? Okay.
Yes. Okay, just wait, go a minute. Right now, the Supreme Court of Bengal is called what? The Supreme Court of British, not the Supreme Court of what? The India. Supreme Court of India has been renamed in the year 1958, 1948, when the concept of independence come. We have get the independence in the executive. We have got the independence in where? Legislative. But we have not get the independence of what? Judiciary. आम जुडिशियरी पे मैंने कौन करें इंडिपेंडेंस पाइने बिकॉज दैट लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द होम ब्रिटिश. ओके, नाउ देखो द नेक्स्ट एक्ट देखो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784. राइट, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट केते कहली प्ले माने 1784. नाउ इफ यू सी द 17th सेंचुरी मन रख 17th सेंचुरी रो 1773 act पर 1784 act आसिला. Now they have implemented the law, they have suffered from the law. मन रख सेई माने इंट्रोडक्शन कले लॉ को, सेई माने मन रख सफर हेले को माने से ईस्ट इंडिया कंपनी. तेणु दे हैव डिवाइडेड. रिमेंबर पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट रे देखो 1784 रे कोन हेतिला बैकग्राउंड थिला पिले माने आंग्लो मराठा वार इन व्हिच हैदर अली कौन कले फेल्योर हले माने डिफीट कले. राइट, डिमांड वाज रेज टू पुट कंपनी अंडर द ब्रिटिश क्राउन. नाउ जेतेबेले दीटा जगारु से माने दे आर गेटिंग द रेवेन्यू, देयर इज ए कंप्लेंट फ्रॉम वेयर? द क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ कहले कौन तुमे करछो सेठी? यू आर गेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम टू साइड्स, वन फ्रॉम द लॉ, another from the administration, and third one from the whom? The company. तीनटा जाकरू तुम कौन आणुच रेवेन्यू आणुच. तेणु से माने कौन कले? क्वीन एलिजाबेथ कहले दे आर गेटिंग द प्रॉफिट, वी आर नथिंग गेटिंग. नाउ विल हैव टू इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को आम कौन करवा रेस्ट्रिक्शन करवा. राइट, नाउ दिस इज द मन रख 1784 रे कौन है देख टू शाउट टू ट्रांसफर ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिटरी पावर ऑफ द कंपनी टू द क्राउन. रिमेंबर सेठी कौन है गोटे बिल पास है हाउस ऑफ द कॉमन रे जे जो ब्रिटिश कंपनी जाइए सेठी की दे आर गेटिंग द प्रॉफिट. तेणु तांकर पॉलिटिकल आउ कौन मिलिटरी पावर सबुतक ट्रांसफर कर टू द क्राउन. Now the crown will order to the governor general what will happen, what will your administration on going on, what you will have to do. It will be the order of whom? Crown, not by yourself. Now what will be the motive of the East India Company? Their laws has been transferred to the crown, their administration has been transferred to the crown. Now what will be the left? The left is the business. तांको पाखरे रहिला कोन पिले माने बिजनेस टा रहिला. सो दे हैव स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? मोनोपोली. मोनोपोली जिनसटा को धीरे धीरे कोन कले स्टार्ट कले. मोनोपोली मीन्स अर्थ मन रख देयर इज ए सिंगल मार्केट, देयर विल बी नो इम्पोजिशन ऑफ द मार्केट फ्रॉम द मराठा, देयर विल बी नो मार्केट इम्पोजिशन फ्रॉम द पोर्तुगीज, नो मार्केट इम्पोजिशन फ्रॉम द फ्रेंच. एमानकठू कोनोसी मार्केट रे रेगुलेशन हे परिबो नाही. जो मार्केट हबा आमर हब. आ मार्केट रो अर्थ कौन? मार्केट रो अर्थ होची कौन? रिसोर्स. इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. मन रख मोनोपोली रो अर्थ मन रख देयर इज ए सिंगल मार्केट माने यूके केवल जिनस नब कहार इंडिया रो नब. काहेकि नब? टू अवॉइड द करप्शन प्रैक्टिसेस ऑफ होम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बुझेला? मार्केट रो अर्थ होची मन रख इट रिसोर्स नॉट द प्रोडक्ट. द रिसोर्सेस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द यूके.
Now they will make the product not by making the product by the East India Company. They will make the product, then again that product will be imported to our country. It will be now sold in a particular market, not by the markets which is sponsored by the French or Portuguese. फ्रेंच पर्तुगीज भितर जो मार्केट अच्छे सेठी से प्रोडक्ट कौन हेनी बिक्री हम ना. आ यू नो मोनोपोली इज द मोस्ट डेंजरस मार्केट भितर सब डेंजरस मार्केट हूँ पे मैंने कौटा मोनोपोली मार्केट. ओके नाउ देख नेक्स्ट देख पे मैंने चार्टर एक्ट आसिला 1784. नेक्स्ट चार्टर एक्ट रे देख डिफरेंट टाइप ऑफ कौन लिखाई तुमर पॉइंट लिखाई तुम देखिपर सबुतक तो देख मुझे कहूँ गोटे गोरपटे. Now the administration of the British East India Company has been divided into two categories. मन रख. One is what your board of control, another is what your court of director. मन रख. Board of control आउटे कौन कहली court of director. It was already a provisions from the recommendation of food crown से देखिले जे मोनोपोलीटा जेहेतु स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी रे द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मन रख. वन इज योर व्हाट योर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अनदर इज योर व्हाट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. वन इज योर लॉ, अनदर इज व्हाट योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल. लॉटा तावटरे जीव. एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो हेड जे रहिबो सी केमिति काम करिवो आई विल एडवाइज टू हिम. माने गवर्नर जनरल कथा कहूछ. ओके तेणु जितेबले गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा डिवीजन होगा ताले इट विल गिव ए गुड न्यूज टू द प्रिंसेस. सबू राजा को एटा गोटे कौन देला गोटे गुड न्यूज देला जे आउ मोनोपोली रहिबनी. बुझीला आउ मोनोपोली जो जिनसटा करुची ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा करि परिबनी. देयर विल बी ए डिवीजन ऑफ द पावर. लॉटा ता भितर जीव, एडमिनिस्ट्रेशनटा ता भितर जीव. किंतु या भितर मन रख गोटे रहस्य लुचि थिला. Now the crown will tested the concept of the monopoly of the British East India Company. से टेस्ट कले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोलीटा इंट्रोडक्शन करिछि सेटा सक्सेसफुल हबो ना हबनी. आउ देखिला बेलू कौन है धीरे धीरे सक्सेसफुल हैला. मन रख कारण मोनोपोली जिनसटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोडक्शन करथिला इन ऑर्डर टू गिव ए एश्योरेंस टू द प्रिंसेस दैट तुम मानकर प्रोडक्ट को ही आमे नबू आउ कोनोसी कंट्री प्रोडक्ट को आमे नबू नाही. तेणु इंडिया मार्केट स्टार्ट होता पे मैंने मन रख मोनोपोली रू आ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जिनसटा कहूँ जे गोटे मार्केट कौटू स्टार्ट हम पे मैंने मोनोपोली रू. आगुरी मोनोपोली नथिला, आगुरी डिवीजन थिला. मन रख डिवीजन ऑफ द मार्केट थिला किंतु मोनोपोली नथिला. बुझीला. तेणु जिते बड़े मोनोपोलीटा धीरे धीरे सक्सेसफुल हैला ब्रिटिश क्राउन कहले नाउ यू विल हैव टू एक्सटेंड दैट मोनोपोली टू अनदर 20 वर्ष 20 इयर्स पर्यंत यू विल एक्सटेंड दैट मोनोपोली. 20 वर्ष पर्यंत सेटा कौन करागला पे मैंने एक्सटेंशन करागला. तेणु ए क्रेडिट किए नब, क्रेडिट किए नब गवर्नर जनरल नब, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नब, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नबनी. बुझीला. तेणु एठी धीरे 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 कौन है गवर्नर जनरल पावरटा धीरे धीरे कौन है बढ़ी बढ़ी चल. जिते सबू एरिया को मोनोपोलाइजेशन एक्सटेंशन हो गला ही इज कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ द बेंगल. नाउ ही विल बी कंसिडर्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. मन रख इंडिया रो गवर्नर जनरल करागला गवर्नर जनरल. देखो देयर इज ए टू वर्ड्स इंटरमिक्सिंग. गवर्नर मीन्स व्हाट एग्जीक्यूटिव एक्शन, जनरल मीन्स व्हाट आर्मी. आर्मी रो गोटे डेजिग्नेशन होची जनरल. नाउ द गवर्नर जनरल विल अगेन हैंडल बोथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लॉ. अगेन द पावर ऑफ द क्राउन इज डिक्रीजेस कारण से ऑलरेडी लॉ टाको नहीं जाइथिले, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन टाको नहीं जाइथिले, सेठी पास हेले जाइके एठी काम करिवो. किंतु अगेन जे गवर्नर जनरल थिले सी क्राउन को कौन कले पुणी तांकर जो पावरटा थिला ब्रिटिश रे तांकर कमे देले.
कारण मोनोपोलीटा स्टार्ट किए करथिला मु करथिली तमे मते कहिथिलो कि मोनोपोली तमे तो नहीं गलो ना लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टाकू तुमे सेठी हैंडल कले आमे एठी कोन करिवो इंप्लीमेंट करिवो तेणु धीरे धीरे कौन है पे मैंने देख द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन फुलफिल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ऑब्जेक्टिव थिला प्रथम जिते आसला टू मेक ए स्टार्ट ऑफ द बिजनेस विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हैज बीन फुलफिल्ड नाउ दे विल एक्सपांड अदर टेरिटोरी सबू टेरिटोरी को धीरे धीरे कौन है एक्सपांशन कला अच्छा एक्सपांशन करिवो केमती नॉट बाय द डिफिटिंग ऑफ द वर्ड्स by implementing the same jinso law introduction karagala permanent settlement with the acquiring of the land राउतवारी system then mahalwari system ये सबू हेतला पिले माने मन रख इट इज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कारण फर्स्ट कंसर्न थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो इट इज द लैंड मन रख लैंड टा हमकु पाइबार अछि विल हैव टू टेक द रिसोर्स दे विल स्टार्ट द मोनोपोली तेणु मन रख एटी तुम दीटा जिनस मन रख कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो दीटा जिनस कौन करागला सेपरेट करागला एटा क्राउन कर गोटे डिसीजन थिला किंतु निजे क्राउन एथिरे कौन होगले फसीगले कहले मु तो लॉट आनिली एडमिनिस्ट्रेशन आनिली पुणी कौन है मोनोपोलाइजेशन स्टार्ट है राइट सेकेंड जिनस देख जिते निजे कंपनी सबुआडे कौन होगा पॉपुलर हो गला से कौन है पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट है छोट छोट कंपनी जो माने थिले माने तांकर ओनर को माने थिले प्रिंसेस रो थिले छोट छोट कंपनी जोड़ाक थिला तांकर ओनर किए थिला प्रिंसेस थिले तेणु से माने वर्तमान ब्रिटिशर पाखक आसिले से ब्रिटिश जहांगीर पाखक जाइथिले से ब्रिटिश सिराजुद्दौला कन्स्पिरेसी करथिले मन रख वर्तमान से प्रिंसेस रो लोक गुड़ाक ब्रिटिशर पाखक आसिले कहले वी वांट टू मेक द बिजनेस नाउ दे हैव सरेंडर्ड द बिजनेस आल्सो फर्स्ट सरेंडर कले लॉ सेकेंड सरेंडर कले पिले माने एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड सरेंडर कले मन रख बिजनेस तो देख अगेन द पावर ऑफ द क्राउन इज डिक्रीजिंग बिकॉज ही इज ए नॉमिनल हेड इट्स नॉट ए एग्जीक्यूटिव हेड और यू कैन से द रियल पावर exists in the crown not the crown on the governor general बुझी पारल एटी गोटे इंपोर्टेंट पर्सन देखाई देख द एक्ट सेपरेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम द कंपनी मन रख बुझी पारल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहिबो आ जुडिशियरी फंक्शन मन रख अलग रहिबो तार अर्थ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंगल टा कहीं एस्टाब्लिशमेंट करागला जदि कंपनी हैंडल कला जुडिशियल फंक्शन को तारे सुप्रीम कोर्ट को कहीं एस्टाब्लिश करागला तार किसी रीजन नहीं बुझी पारला तेणु देख प्रथम जोड़ा होता बर्तमान पुणी से तीन टा जाक पावर ईस्ट इंडिया कंपनी पाखक पलि आसला बुझेगा बुझी पारल ना बुझी पारल धीरे 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 तीन टा जाक सब्जेक्ट चार्टा सब्जेक्ट लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियरी बिजनेस ये चारिटा सब्जेक्ट का हाथ को आसला पे माने ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को पलि आसला नाउ जितेबले ईस्ट इंडिया कंपनी पाखक को आसला व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी मन रख नाउ यू विल हैव टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बेस को केमती एक्सटेंशन करबा देख 1793 रो जो चार्टर एक्ट थिला मन रख 1793 रो जो चार्टर एक्ट थिला बुझी पारल एथिरे धीरे 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 कौन है जेतक बिजनेस पर्सन थिले इंडिया रो समस्त पावर को निज हाथ को आने को चाहिला दे विल बी ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द एरिया व्हेयर देयर इज ए प्रोसेस ऑफ द बिजनेस जोड़ी जोड़ी बिजनेस थिला से एरिया रो रिप्रेजेंटेटिव को मान हेबे से एरिया रो कौन हेबे बिजनेस पर्सन हेबे तेणु देख स्ट्रैटेजी रहिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बेस विथ द हेल्प ऑफ द बिजनेस मन रख बिजनेस रे धीरे धीरे कौन करिवो एक्सटेंशन करिवो राइट नाउ द नेक्स्ट एक्ट देख
चार्टर एक्ट 1813 मन रख जो गोटे एक्ट रे निजे क्राउन एक्सटेंशन करैथिले मोनोपोली को नेक्स्ट एक्ट रे से ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को कौन कले उड्र करदेले कले नाई सेमती ही परिबन बर्तमान तुम्हें बिजनेस को बेस करके टेरिटोरियल एक्सटेंशन करोच मो मोनोपोली रो अर्थ कौन मोनोपोली रो अर्थ होची यू हैव टू मेक ए सिंगल मार्केट तुम्हें जदि बिजनेस को नहीं कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन करैबो ताले सबु स्टेट रे तमरो बिजनेस रही जीवो नाउ यू विल बी द सुपर पावर मोर तो किछि लाभ नहीं मोर रही बुझी पारल तेणु चार्टर एक्ट 1830 रे फास्ट एक्शन निया गला ईस्ट इंडिया कंपनी रो जे जो मोनोपोली पावर दिया जाइथिला बुझी पारल सेई मोनोपोली पावर को विथड्रॉ करिया पय निष्पत्ति निया गला बुझी पारल तेणु जेतेबेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजर टेरिटोरियल को एक्सटेंशन करिछि को प्रोविंसेस को करछि देख गोटे करिछि मद्रास आ गोटे करिछि बॉम्बे आ गोटे करिछि कलकत्ता तेणु एई जो कथाटा कहा पाखु गला ब्रिटिश पाखु गला ब्रिटिशर्स कहले दीज आर द थ्री एरियाज वेयर द अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेस इज द हाईएस्ट बुझी पारल तेणु ए तीनटा एरिया को प्रोविंशियल स्टेट पाइका रिकमेंडेशन करागला ईस्ट इंडिया कंपनी तेणु तीनटा स्टेट रे गोटे गोटे रिप्रेजेंटेटिव रहिले कारण मद्रास बॉम्बे आउटे कौन कहली कलकत्ता एथिरे गोटिए एरिया नहीं पिले माने कर्नाटक नहीं मन रख कारण कर्नाटक जिते मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी मद्रास बॉम्बे सॉरी बॉम्बे रे जिते मराठा एडमिनिस्ट्रेशन थिले सेतेबेले जिते मराठा कौन होगा डिस्ट्रक्शन हो गला सेतेबेले कौन है ये गोटे गोटे कन्स्टिट्युएंसी रे कौन कन्वर्ट हो गले जमती कि गायकवाड़ भोंसले पेशवा बुझेला तेणु डिसइंटीग्रेट जिते हो गले देयर विल बी ए राइजिंग पावर ऑफ द ब्रिटिश सेम जिनस होता तुमर कौटी मद्रास रे सेम जिनस होता तुमर कलकत्ता रे किंतु कर्नाटक रे ही नथिला पिले माने तेणु प्रोविंशियल स्टेट को मैसूर भी ही था किंतु मैसूर जिते टीपू सुल्तान हैदर अलींकर जो युद्ध होता से जहाँ भी टिके ब्रिटिशर मानकर कौन थिला टिके डर थिला बुझीपारच ना नहीं तेणु मैसूर को करा जाई था मन रख कारण मैसूर दी जनकर पतियारा थिला गोटे हूँ पर्तुगीज आउ गोटे हूँ मन रख हैदर अली आ जदि मैसूर को होता ताले चारिटा प्रोविंशियल स्टेट होता गोटे मद्रास बॉम्बे मैसूर आउ गोटे कौन कहली कलकत्ता एथिरे सबुठु इंपोर्टेंट पोर्शन थिला पिले माने कलकत्ता थिला तेणु ये तीनटा प्रोविंसेस को कंट्रोल किए कला ब्रिटिश कला आउ ईस्ट इंडिया कंपनी कलानी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जदि एक्सपांशन करिवो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिजनेस सबु रिसोर्स तक खाई जीवो देयर विल बी ए लेस प्रॉफिट ऑफ द क्राउन रो पावर टा देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जेते उठिवो क्राउन रो पावर टा सेते कोन हो जीवो कमी जीवो बुझीपार ये सर नो तेणु दिस इज ए मेजर एक्ट मन रख 1813 हूँ पे माने गोटे एक्शन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राइट ओके नाउ वर्तमान देखिबा हमें नेक्स्ट एक्ट देख 1853 बुझेला देख 1853 आम देखा 1853 जदि आम देखा एक्ट पिले माने देख 1853 पर तुम 1857 कौन हो सिपाही म्यूटिनी हो बुझेला 1857 कौन हो मन रख सिपाही म्यूटिनी हो हाँ कि नहीं ये सर नो राइट
केस तेणु 1853 जिते आम एक्ट देखा मन रख 1853 जिते आम एक्ट देखा 1853 पर मन रख 1854 तुम डेल हाउस ये टाइम आसला मन रख लॉ डेल हाउस जिते आसला ये जो एक्टा मन रख सेपरेटेड करिगला लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल प्रथमे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट को कौन करथिला डिवीजन करथिला सेकेंड देख गवर्नर जनरल पावर टा कौन कला डिवीजन कला तेणु गवर्नर जनरल ये भावुला आई एम द सुपरियर मु हूँ सुप्रीम कोर्ट मु आई विल हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन प्रथमे देख ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दिभाग करागला सेकेंड करागला मन रख गवर्नर जनरल काउंसिल फंक्शन टाक दिभाग करागला लेजिस्लेटिव आउटे कौन करागला एग्जीक्यूटिव फंक्शन बुझेगा कहीं करागला बिकज बर्तमान तुम स्टार्टेड हो गला देयर इज ए रिवोल्यूशनरी टेरिटोरी स्टार्टेड आ रिवोल्यूशनरी टेरिटोरी रे जो माने पार्टिसिपेट करुथिले दे आर नॉट फ्रॉम द अदर स्टेट दे आर फ्रॉम द स्टेट where there is a concern of the security जोटी सिक्योरिटी कंसर्न थिला सेठी ही रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कौन होथिला स्टार्टेड होथिला ओके ए टाइम रे तमर कोन आस्थिला वुड्स डिस्पैच आस्थिला पिले माने जोडा कहउछ माग्ना कार्टा ऑफ कोन इंडियन एजुकेशन तेणु जो माने रिवोल्यूशनरी टेरिटोरी रे काम करुथिले तांकू एजुकेशन थ्रू रे अवेयर करिवा पाइका तमर वुड्स डिस्पैच आस्थिला बुझेला मकाउला कमिटी देख ये टाइम रे भी आस्थिला देयर विल बी ए इंट्रोडक्शन ऑफ होम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कारण सेतेबेले एटा कोन कह जाउथिला आईसीएस कह जाउथिला मन रख इंडियन सिविल सर्वेंट कह जाउथिला कारण सिविल सर्विसेज रो जो ट्रेनिंग ता तमरो दिया जाउथिला सेटा कोडी दिया जाउथिला यूएस रे सॉरी यूके रे दिया जाउथिला नाउ दे हैव अपॉइंटेड कोडी होतिले इंडिया रे होतिले ओके द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज गिवन द पावर टू गिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन एट एनी टाइम ऑफ बुझी पल्लो तार अर्थ होउची ब्रिटिश पार्लियामेंट रे डिसाइड करा जीवो ब्रिटिश क्राउन को केते बेले एडमिनिस्ट्रेशन दिया जीवो कारण धीरे धीरे कौन होउची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो पावर टा कौन होउची बढ़ी बढ़ी जाउची बुझिला तेनु एठी मन रख जेते बेले 1853 रो एक्ट आसिला चार्टर एक्ट आसिला सेते बेले कौन करा गला जो माने इंडियन मेंबर थिले प्रोविंशियल स्टेट रे बुझी पल्ला प्रोविंशियल स्टेट रे जो माने लीडर थिले तांकू नै कि सेठी कौन करा गला गोटे गोटे मेंबर करा गला एडिशनल मेंबर अर्थ होची पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियंस माने कौन करिवे पार्टिसिपेट करिवे राइट 1857 रो सिपाही म्यूटिनी परे जेतेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसिला देखो या ना लिखा हिची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बुझेला या ना कौन लिखाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तार अर्थ होची दे हैव ट्रांसफर्ड द पावर टू द ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रथम थर कहीं गोटे एक्ट लिखाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कारण सिपाही म्यूटिनी होता सिपाही म्यूटिनी परे तमर लॉर जो एनफोर्समेंट होता सेटा बढ़ी जाइथिला गोटे रेस्ट्रिक्शन करा जाइथिला सब लीडर को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कौन कराइथिला रेस्ट्रिक्शन करा जाइथिला 1858 रो जो एक्ट रू तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहिथिला प्रोसीजरटा केमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूशन करा हबो जोथिरे सबु प्रोविंसेस आ सबु वर्गर लोक कौन पाइबे जस्टिस पाइबे सेटा स्टार्ट कराइथिला पिले माने कोडू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केते 1858 बुझी परिलो ये सर नो आउ सबुठु इम्पोर्टेंट थिला मन रख ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ा कहूच तार जो रूलटा थिला सेटा एंडेड हो गला एंड सबुतक क्या हाथ को आसिला क्राउन हाथ को आसिला कारण 1857 रो जो सिपाही म्यूटिनीटा
गोटे मेसेज देइथिला काहाकू क्राउन को देयर इज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मन रख तेणु जिते बेले एटा गोटे कौन दि जाइथिला गोटे मेसेज देइथिला क्राउन को सेतेले क्राउन कौन कले डिसाइड कले दैट पावर शुड बी हैंडल्ड बाय किए मी तेणु 1858 रे सेकेंड पॉइंट देख ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूलटा कौन गला एंड हो गला आ सबुतक क्या हाथ को आसला क्राउन हाथ को आसला ओके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोड़ा तुमर बनिया होता रेगुलेटिंग एक्ट रे सेटा कौन है पिले माने आबोलिस्ट करागला चार्टर एक्ट रे जोड़ा कराइथिला दैट वाज आबोलिस्ट कारण गवर्नर जनरल रो जेहेतु डिवीजन ऑफ द पावर करागला बुझेला गवर्नर जनरल जिते पावरटा कौन करागला डिवीजन करागला सेते बेले आउ कौनसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रो वैल्यू किछि रहिलानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो वैल्यू किछि रहिलानी तेणु ताऊ कौन कराइगला आबोलिश कराइगला राइट गवर्नर जनरल को विड्रॉ करिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करागला बुझेला सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रो बदल रे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करागला आउ काउंसिल करागला बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर रे तार रिप्लेसमेंट रे करागला तेणु एथरे कौन है सेक्रेटरी रो अर्थ मन रख सेक्रेटरी अर्थ होची गवर्नर बुझेला सेक्रेटरी रो अर्थ कौन किले पिले माने गवर्नर राइट तेणु सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आउट कौन कहली पिले माने इंडियन काउंसिल द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वुड बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटिश रो कैबिनेट रो जण मेंबर रहिबो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट तार अर्थ होची गवर्नर जनरल बुझी पारल गवर्नर जनरल टा कौन करुची तार एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे जानिबा को ब्रिटिश रो कैबिनेट रो जण जण मंत्री आसीबे दे विल हैंडल द स्टेट्स अफेयर्स whether it is provincial state or what princely state ओके आउ इंडियन काउंसिल मन रख जोटा हैला एटा पिले माने 15 मेंबर रहिला हला आ इथरे मन रख इंडियन मेंबर भी रहिले जो सेक्रेटरी हेले सेथिरे प्रथम सेक्रेटरी हेले वुड्स हेले मन रख एटा भी बेले बेले क्वेश्चन पड़ुची प्रथम सेक्रेटरी किए हेले चार्ल्स वुड्स हेले राइट गवर्नर जनरल रो नाम टाकू चेंज करिकी कौन करागला भाइसरॉय ऑफ इंडिया करागला बुझेला भाइसरॉय माने तुमे उटे एटी कांसेप्ट देखिबो भाइस प्रेसिडेंट रो कांसेप्ट देखिबो ओके द फर्स्ट भाइसरॉय मन रख लॉर्ड कैनिंग बुझी पारलो फर्स्ट तमर भाइसरॉय किए लॉर्ड कैनिंग तेणु लॉर्ड कैनिंग ठू तमर केमिति देख कॉन्स्टिट्यूशनली चेंजेस हैला आउ कौन कौन सब एडेड हैला एटा मु कौन करी आउ गोटे क्लासेस रे कौन करी पार्ट 2 रो करी ओके सो आज मन रख सेतिकी नेक्स्ट क्लास रे टू बी कवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्सपांशन ऑफ द प्रोविंसेस 1891 92 तापर आसीबो तुमरो 1909 तापर आसीबो 1919 तापर आसीबो 1935 और लास्ट को आसीबो 1947 ओके नेक्स्ट क्लास रे एटा कोन हबो कवर अप हबो आजि पई कोन सेतिकी आउ समस्त को धन्यवाद जो जो माने जॉइन कल आउ मन रख जदि तुमर या विषय आउ टिके एक्सपांशन ऑफ द नॉलेज जोड़ा तुम्हें चाहूच फॉर ओडिशा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन पाइका या परे तुमर PYQ कौन होची स्टार्टेड होची PYQ जोड़ा कहूच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन जॉइन द प्लस सब्सक्रिप्शन मन रख प्लस रे होची क्लास मोर कोड होची पिले माने CB10 यू कैन जॉइन द प्लस हला धन्यवाद।